So, friends, this is Vasudev Panda. Welcome to the class again. Ethics and Values, 11th class. I think so. ଆଉ ପାଞ୍ଚ ସାତଟି କ୍ଲାସ୍ ପରେ ଆମେ ସାରିଦେବା ବହିଟା ଟ୍ରାଏ କରିବା ସାରିବା ପାଇଁ ଇଫ୍ ପସିବଲ୍। ସୋ ଆଜିର ଚାପ୍ଟର ହେଉଛି ଆମର ଜେଣ୍ଡର ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପିଂ ଏଟ୍ ୱାର୍କ। ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ୱିମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଦେୟାର ୱାର୍କ ଇନଭିଜିବଲ୍ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ୱିମେନ୍ ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତ ଆଜି ପଢ଼ିବା ଜେଣ୍ଡର ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପିଂ। ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପିଂ କହିଲେ ପିଲେ ନର୍ମାଲି ନେରୋ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକତା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପିଂ କହିଲେ ନାଇଁ। ତ ଏଠି ଅଛି वी often have deep rooted ideas about the attributes and capacities of men and women। ସମାଜରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମାନେ ଅବଦାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଣାବଳୀକି ନେଇକି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ରହିଛି, ମାନସିକତା ରହିଛି କି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମାନେ ୱିକ୍, କାମ ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ ଠିକ୍ ସେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ରହିଛି। And these shape our expectation of the roles they need to play in society. And from this mentality, whatever mentality we are possessing, from this mentality it is shaped कहले से जो आम मानसिक भाव में गोटे आकृति तैयारी हो जाए and our expectation of the roles they need to play in society। समाज रे जो भूमिका से माने निर्वाह करवा कथा मेन एंड वुमेन, आमे से एक्सपेक्टेशन बेस रे ही से भूमिकाटा को माने तैयारी करथाउ, से चित्रटा आमे निजे तैयारी करथाउ। And these are called stereotypes, and these are called, this mentality or mindset of men and women is called stereotypes। We strongly feel that men are suitable for some jobs while women are suitable for some others। And according to our society, our custom and tradition, what our ancestors were telling us and whatever views were passed to us orally by our forefathers and fathers, from them it is very clear that we feel women as weaker in comparison to men। स्त्री मानक सब दुर्बल बोलिकी कहुए समाज रे, while women are suitable for some others। आउ आमे भाग कर देछि कि एई काम झाड़ू मारिबा काम केवल स्त्री करिवो, पुरुष माने रोसई काम माने पुरुष मानक पई नुह, एई भलिया जो मेंटालिटी रहिछि एटा को ही आमे स्टेरियोटाइप मेंटालिटी बोली कहउछरे पिले। Such preconception still dominates our employment, and these are what preconception माने पूर्व धारणा। ए धारणाटा आगे थिला, एबे भी अछि, आगुक भी रहिबो जो दिन पर्यंत आमे ए आम भितरे कोन आइडिया परिवर्तन होबो नाही। Still dominates our employment market and decide the work to be assigned to men and women। Decide the work that to be put on men and women। Many of us have a strong feeling that men are physically stronger than women। yes or no? So आमर भितरु बहुत लोक विश्वास करती कि पुरुष माने महिला मानक ठारू फिजिकली दे आर पावरफुल, शारीरिक भाव सक्षम, आउ वुमेन मानक आम वीकर सेक्शन, मुझे से जिनटा रिपीट कर सारी। They are better at handling risk and they are more intelligent than women। How कौन that men can treat the risk in a better way than women। आउ कौन कह जाए जे पुरुष माने जो रिस्क की काम आसे से पुरुष माने से कामटा स्त्री मान अपेक्षा भलसे करि पारंती है। And they are more intelligent than women। There is also a misconception that men are more intelligent than women। जदि यही भलिया थांता ताहले तो सबु परीक्षा जेतिक होची, सबु चाकरी सेक्टर जेतिक होची, सबु जगह केवल पिला माने ही पाते, पुरुष माने ही पाते। कहीं यूपीएससी रे टप्पर गोटे झी होची, कहीं जेई मेन रे टप्पर गोटे झी होची, जदि इफ दे आर वीकर and they are more talented, men are more talented than women, if so, which helps them become decision makers। And because man is intelligent than women, as our mentality is amara manasikata anusare, that's why men are the decision maker in the family, in the society, in the community। देखिथिबो गाँ रे केतेबेले कोनोसी जो न्याय निशाप हुए, कोनोसी माने सभा समिति हुए,
से जगह स्त्री मान को डका जाई न थाए जिते कौन से निष्पत्ति नि जाऊ थाए कारण समाज रे आम स्त्री को से भाया स्थान दौना नहीं. So yes, they have better ability to take up responsibility and are more rational compared to women. And also it is considered in our society, our समाज रे धारणा प्रचलित अछि जे means men have better ability to take up responsibility. दायित्व संपन्नतार प्रश्न जिते उठे जे भल भाव परिवार दायित्व केवल किए नहीं पारे जे ए माने पो माने ही नहीं पारे. अमित कुमार परिडा बेटा डोंट मैसेज मी इन द क्लासेस इन बिटवीन द क्लासेस यू आर डिस्ट्रैक्टिंग मी बेटा. ओके I'll make a video on that what you are telling but don't distract me inside the class at least please. जहार क्लास रे से मानकर प्रश्न क्लास चली माने you are to ask only class related question, no other comments, no other questions. I don't like such type of things there inside the class. So as per women in comparison, if we'll compare them, as per women, we assume that they have a concern for others, are better at dealing with the public, display emotional sensitivity to people who surround them, are sacrificing by nature. जमती आम पुरुष विषय पढ़ले बर्तमान स्त्री मान विषय कौन धारणा अच्छी समाज में ताहले स्त्री मान धारणा जदि आम नवा वी अज्यूम मीन्स थिंक बेटा. So, we assume that they have a concern for others. ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କୋଉମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ. Then are better at dealing with the public, display emotional sensitivity. They display emotional ସେଥିପାଇଁ ରିସେପସନ୍ କାଉଣ୍ଟର ଲେଡି ମାନେ ହିଁ ରହନ୍ତି କାରଣ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ they can they are better at dealing with the public. ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲସେ ଡିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି. प्रत्येक रिसेप्शन काउंटर रे देखी बोले झील मैंने बसंते नहीं. सो यस पब्लिक डिस्प्ले इमोशनल सेंसिटिविटी एंड दे हैव इमोशनल सेंसिटिविटी. दे आर वेरी इमोशनल इन कंपैरिजन टू men according to our society. I'm not telling this. These are written in your book. That's why I'm telling. Are better at dealing to people, then sensitivity to people who surround them and are sacrificing by nature. त्यागर प्रतीक बोली कहा जाए स्त्री को जे त्याग जदि करिवार अछि स्त्री माने ही करिवे पुरुष माने करिवे नहीं. सते कि स्त्री माने कॉन्ट्रैक्ट नहीं कि जन्म नहीं चंती त्याग करिवा पई ओनली दैट द वुमेन विल सैक्रिफाइस व्हाट एवर मैटर इट मे बी. नो मैन विल बी देयर दैट हु विल सैक्रिफाइस देयर. इट्स नारायण फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन. EVS and ethics are two different subjects. EVS stands for ethics and values. Please try to understand the meaning of ethics and values. And EVS, environmental society, environmental science. So EVS is a part of science, normal science, general science you can say. And ethics and values is a part of moral science. This is the difference between EVS and ethics and values. So women are often judged as physically less capable. Women are often judged as physically less capable, mentally less equipped, and unsuited for challenging jobs. Getting me? So, women are often judged as physically less capable. कौन करा जाए से माने they are physically less capable in comparison to men. माने शारीरिक भाव एते सक्षम नुहंती जो रूपरे जो रेट्रे पुरुष माने सक्षम. Mentally less equipped and unsuited for challenging jobs and they are mentally weak. मानसिक भाव तंगर मानसिक स्थिति एते स्ट्रांग न थाए पुरुषंक भली स्ट्रांग न थाए जा फल रे से माने चैलेंजिंग जॉब करि पारंती नाही. समाज रे विश्वास अछि एक्जेक्टली दिस इज नॉट द फैक्ट. चैलेंजिंग जॉब्स and these are only bias and guides us and generate discriminatory practice for women in the employment market. And these are nothing. These are only biased view. माने भिन्न भिन्न मत आउ तुम कह आमको माने प्रवर्तेला भाया अंध कला भाया माने अंधार रखिला भाया मत सबू ये मत सबूर कौन आवश्यकता नहीं कि कौन माने सत्यासत्य नहीं. स्त्री जदि स्त्री मेंटाली वीक होता ताहले जो समाज रे जो भाया अत्याचार होउची
तो से माने बंची न थांते संघर्ष करू न थांते हाउ कैन यू टेल वुमेन आर वीकर देन मेन हैं and by this what happens it brings discriminatory practices for women in the employment market and by this only what happens it brings discriminatory practices for women in the employment market ଏହା ଦ୍ୱାରା जो आम रोजगार बाजार रही एम्प्लॉयमेंट मार्केट रही एम्प्लॉयमेंट मार्केट रे गोटे भेदभाव सृष्टि हुए हैं जे नाई स्त्री मान को ये काम कहीं देल तुम से झीटा ताक यही कम दबा कथा नुह एटा झील मान सुइटेबल जॉब नुह से पुओ को जदि दि जाए पुओ को यही कम कहीं देल पुओ यही कम कर why this discrimination is there if we are telling in some extent we are telling that men and women are equal if they are equal why there is discrimination in job sector why there is discrimination when religious practices are occurring in our society why this stereotype mentality is being prevalent there the question arises and we must ask this question to ourselves first of all in the meantime society has progressed women are being encouraged to enter STEM so in the meantime ei mane jo samay bisar ame katha hoche society has progressed ama samaj kon କରୁଛି pile उन्नति करी चलछि encourage कोन उत्साहित करा होछि to enter STEM STEM यार डेफिनेशन ना मन रखा पile STEM stand for science technology engineering and mathematics STEM science technology engineering mathematics this is an acronym मन रखा ए acronym रो अर्थ होछि science technology engineering and mathematics fields and the armed force in our own country एते सब सेक्टर रे गला परे भी वुमेन माने इवन इफ आर्म फोर्स रे भी जॉइन करूछंती ओन कंट्री वी फाइंड हम पाइबा women doing many top jobs like member of board rooms CO and police services piloting fights and fighter planes आमे जदि वर्तमान समाज रे खोजिबा कि समाज रे स्त्री माने कोन कोन काम करूछंती को जगह रे अछंती यू कैन सी इन बोर्ड रूम्स जोठी माने बोर्ड कहले बुझी परतो तमे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मेंबर्स आमे जेमति कहूचे ये माने कोन करि परिबे ए माने सेठी भी थामते तांगर प्रेजेंस अछि पुलिस सर्विस रे अछंती यस अछंती पायलट ही की अछंती यस अछंती फ्लाइट एंड फाइटर प्लेन्स फ्लाइट रे अछंती फाइटर प्लेन्स से पायलट से की अछंती हैं then the role of women scientists like M Banita and Ritu Karital head of the company yes you can say the role of women scientists mahila vaigyanik mananga bisar jetebale ame kahuche M Banita one of the reputed scientists in India Ritu Karidal one of the best scientists in India in the ISRO mission Chandrayaan 2 रे भाग नहीं दुई जन महिला एमाने मन रखा एम बनिता एंड ऋतु खरीदार सो दे आर पार्ट और their achievements towards that mission cannot be denied cannot be ignored yes yaar they are also working everywhere how can you discriminate Ritu Karidal ISRO mission Chandrayaan 2 the stories of Indra Nooyi we must have known Indra Nooyi it's a name famous name Kiran Majumdar Shah and billionaire entrepreneurs Kiran Bedi किए जानी नहीं के पिले किरण बेदी के विषय समस्त जानी आम इंदिरा नूयी के विषय समस्त जानी किरण मजुमदार शाह के विषय भी समस्त जानी देन भावना कांत पायलट ऑफ इंडियन एयरफोर्स ए माने समस्त दे आर रेप्यूटेड लेडी इन देयर ओन सेक्टर वॉट एवर सेक्टर दे आर वर्किंग दे हैव डिफरेंट रेपुटेशन सो हाउ कैन यू टेल दैट वुमेन आर वीकर देन मेन Airforce symbolize the breaking of the stereotypes and from this example it is very clear that they are able to break the stereotype mentality but the question arises now but these comprise a countable few but if you look at the top jobs where women are assigned only a few women will get केवल किसी हाथ गणती महिला पाइबा आमे पिले एई भलिया जदी सेक्टर सब एई भलिया टॉप लेवल जॉब सब जते आमे देखिबा but this comprise a countable few the uncountable many are still victims of gender stereotyping at work and maximum women who are doing jobs
sensationally great, you can say, बहुत बढ़िया काम करछन्ते, still they are facing stereotypy mentality in the job sector. ଏବେ ବି ସେମାନେ ଭେଦଭାବର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ମାନେ ଅଫିସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମିଳିବା କଥା ସେଇ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମିଳୁନାହିଁ। And these uncountable many find themselves in a world where jobs are clearly segregated. Clearly segregated. Getting me? So these uncountable many find themselves in a world where jobs are clearly segregated. And ଆଉ ଯେଉଁ women ମାନେ ରହିଲେ, जो बहुत स्त्री रहिले, जो माने जॉब होल्डिंग, स्पेशली जॉब डूइंग और जॉब होल्डिंग वुमेन, दे आर फेसिंग दिस सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन कहले कौन? भाग भाग करवा है, सेग्रीगेटेड। इवन टुडे, आज भाया माने द्वाविंश शताब्दी, इवन टुडे वी फाइंड पोजिशन ऑफ नर्सरी टीचर्स, नर्सेस, टीचिंग जॉब्स, फ्रंट ऑफिस मैनेजर्स, असिस्टेंट्स, अटेंडेंट्स, सेक्रेटरी आर occupied predominantly by women. स्त्री माने आजिकल स्पेशली को जॉब रे अच्छा पिला देख, को जॉब रे से आम भावुचे जे दे आर फिट बोलिकी, से जॉब मान को देखि नर्सरी टीचर केबे जेंट्स है नथिबो, कारण आम गोटे मेंटालिटी अच्छी, माइंड सेट अच्छी जे नर्सरी रे केवल स्त्री माने ही पढ़े पारे, माने से कारण मदरली एफेक्शन रहिबो, motherly affection रहिबो। Yes, I was also once principal in a private school and reputed English medium school. This mentality is still, the management is forcing always that go for female teacher inside the nursery classes. This mentality is still there in each and every corner of our society. अच्छी समाज रे अच्छी मो फीलिंग रो कहूँ, मोर एक्सपीरियंस रो कहूँ पिले। So clearly secretary, nurses, then teachers, then नर्स गोटे देखी नर्स पोस्ट रे बहुत कम मेल थे, नर्सेस। देन टीचिंग जॉब्स भी वुमेन मान को प्राधान्यता दि जाऊँचे। फ्रंट ऑफिस मैनेजर, जमती मो रिसेप्शन कथा टी आगु कहते, रिसेप्शन रे गोटे सुंदरिया झील निहाती आवश्यक रिसेप्शन रे टू अट्रैक्ट द पीपल, व्हाट एवर आई एम टेलिंग द ट्रुथ गाय। Positions of nursery teachers, yes, and then managers and office assistants, even if office assistant, every bus need a female secretary. So office assistant, then attendants, secretary, whatever. Attendants are occupied predominantly by women, and these posts are occupied predominantly by women only. स्त्री मानक द्वारा ही यही सब कार्य संभव। यही काम पाई स्त्री माने फिट बोलिकी आम समाज रे आमे माने यही धारणाटा पोषण करू आम पाखे अच्छी। and these jobs are called pink collar jobs, and for your kind information whatever job I told मु जो जॉब गुडी को विषय कहली ए चाकरी मान को कौन कहा जाए, गोटे टर्म अच्छी एम्प्लॉयमेंट सेक्टर या को कहा जाए पिंक कलर जॉब्स। केवल झील माने करिबा पई उद्दिष्ट थिबा काम बा पिंक कलर जॉब्स बोली कहा जाए। एंड मशीन ऑपरेशंस, नाउ लेट्स सी व्हिच वर्क women's are denied to do. Then machine operators, captains of ship, members of the armed forces, CEO happens to be men. Look at these jobs. Normally a rare few, you can say, women exist in this type of jobs. What are those? Machine operator, यंत्रांश परिचालन करुवा व्यक्तित्व, captains of ship, जहाजर कप्तान, then members of the armed force, सैन्य वाहिनी रे ऊपर लेवल रे थिबा पुरुष मान, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैपन टू बी मेन। प्राय जगह रे पुरुष मानकु ए जॉब मानक रे प्राधान्यता मिलता है। एंड देयर जॉब्स आर नोन एज, आमे वुमेन मानकर जॉब को कौन कहते पिले पिंक कलर जॉब्स, एंड दीज जॉब्स आर नोन एज व्हाइट एंड ब्लू कलर जॉब्स। व्हाट वी कॉल white and blue collar jobs, which are better paid, and these jobs are better paid in comparison to the job I told earlier about women that normally do. Women are trying to break these gender stereotypes. A good example you can see from some of the women, working women in India. जदि आमे भारतीय सक्सेसफुल महिला मानकर करियर विषय पढ़ा आम जापर
जे दे आर ट्राइंग टू ब्रेक दिस स्टेरियोटाइप मेंटालिटी से मैंने ट्राए कर स्टेरियोटाइप मेंटालिटी की ब्रेक करने तो पिले आज ये आज तो समय जाइए आसंता काली पढ़ा अबाउट द ग्लास सीलिंग व्हाट इज ग्लास सीलिंग हाउ डज इट हैपेंस व्हाट इज ग्लास सीलिंग व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्लास सीलिंग इफ आई विल बी देयर आई मस्ट टेक द क्लास मु घरे अच्छी कॉलेज रे अच्छी मु निश्चित भाव क्लास नेबी जदि मोर किसी ऑफिस काम नहीं so I hope so you can understand the life of a lecturer and the life of a YouTuber. So a YouTuber normally dedicate 24 hours towards his channel and everything, and a lecturer had a little time only, and whatever time I'm getting within that time I'm taking the class. Thank you for watching. Thank you for staying with me forever. Bye bye.